ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗਨਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਗਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 2023 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਫਟਰ IBM ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਤੋਂ ਟੀਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਟੀਮ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਨੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਿਖਨੋਮਿਕਸ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਫੜਨੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਗੋਲਡ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋ NZD ਦੀ, NZD USD ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੋਲਡ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ US ਕਾਂਟ ਡਿਫਾਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ USA ਕਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ USA ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ US ਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ $1 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है मार्केट 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ 7 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੋਲਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੋਲਡ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਲ ਜਾਂ ਬਾਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ $500 ਲੋਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5-6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਗੋਲਡ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਡ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਸਾਈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਗੋਲਡ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੋਲਡ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮਾ, IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਨ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਗੋਲਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਵਨ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ CFTC ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਗੋਲਡ ਜੇ ਮੈਲਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ US ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1850, 1800 ਤੱਕ ਜਾਂ 1784 ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆਈ ਵਿਲ ਡਬਲ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਜ਼, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਗ ਲੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਟੁਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ $50 ਜੋ ਅਰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਐਕਚੁਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰੁਕਣ ਤੋਂ, ਗਿਵ ਅ ਟਾਈਮ 5-10 ਮਿੰਟਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਵ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੱਢਿਆ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਰ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਲੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲੋ ਕੈਂਡਲ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਖੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਹਾਂਜੀ। क्योंकि इस चीज में almost 75%. Sorry for interruption, Harinder. We have Daniel with us. So. All right. Daniel, welcome, sir. Hello. How's it going, sir? I am fine. So we were eagerly waiting for you. Here we have Daniel from Canada. I will say he's my mentor. He's my friend, and he is a person I admire the most. Okay. So really, he is the king of price action. So Daniel, welcome to our Sikhnomics core team. Okay, and let me tell you, we are expecting you every week or at least once a month to motivate our team. If you agree. Yeah, sure. We can make time at least once a month. Sure. Okay. I can do that for you. We have a big team here. We have from Canada, from US, from Dubai, Abu Dhabi, and we have all around. We have doctors in our team, and luckily we have equal presence of women in our group. Okay, so because we admire equality. So guys, Daniel is a Canadian-based trader. Okay, I would say he invented many things in price action. Lakhveer Singh, your mic is okay. So the session is recorded. So he is the king of price action, who is actually analyzing micro levels, and his specialization is breaking down from higher time frame to lower time frame, giving preference to each candles, because as of him, each candle does matter. Each candle is a reflection of behavior of buyers and sellers in market. So this is how price action works. So Daniel, copying from you, all of us are only doing price action. Nobody is using any indicator. Okay. And yes, people start tasting success, and they are very, very fond of these price action techniques. So Daniel, welcome again to our group. So guys, welcome Daniel again. Okay. So Daniel is also having his own YouTube channel, Market Protocols. He's having his website, and he's having he's actually giving some mentorship courses also. So if somebody need his techniques, learning from personalized sessions, so you can also switch to his courses. So Daniel, first question is, can you tell us about, in short, yourself, your origin from, or in which language now we can talk, in Punjabi or comfortable, or in Hindi or Urdu mix? So let us know which language you prefer. I'm okay with speaking English, but I can speak Hindi too. If most of the people are not very fluent in English, you may have a hard time understanding what I have to say. So if everybody understands Hindi at least, I can talk in Hindi too, no problem. Okay, so guys, Hindi or Punjabi or English? Give the majority, please. Punjabi I can understand. I can understand it very good. But when it comes to speaking Punjabi, I cannot speak Punjabi. Yeah, I know Canadian people, they have bit, okay, any language. Yeah. So we will go as it comforts us. So Or I can explain it both. I can explain in English, I can explain in Hindi too. Comfortable. Okay, Daniel, about yourself, please. Well, when it comes to trading specifically, I have been trading for the past 4 years. Started consistently, I would say, in 2019. I was introduced in 2018 to trading. How I came across trading, it wasn't really mentioned by a friend or a family member. It was just going through Instagram, right? Okay.
most of the traders online, what they do, they publish their content, right? Using ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube ads, right? Okay. So just one day, I'm just going through my Instagram, I just came across someone who was trading, let's say, Forex markets, right? Making quite a bit of profits. So that caught my attention, that what markets are and how you can make profits out of it. So this is how I was introduced to it. Was I successful in the beginning trading on markets? No, because the information that you actually need to get started, most of the people don't offer it. Okay, mostly is basically trying to get your attention, right? Pay for the service, you will get signals, you copy and paste, right? It's mostly you getting the money easy, right? Just copy and paste and follow our signals, and you will basically, you know, get the same reward as us. If you lose, you lose. If we win, you win, right? So those were kind of the services I got introduced to in the beginning, right? And then let's say a year, 2018 until mid 2019. So you're looking at a year and a half. This is where I truly struggled, Okay. because trying to find the right information, I was not given, right? So 2019 is where I got introduced to Raja Banks. So This is where- we have a common yeah. mentor, right? Raja Banks. Yeah. Amazing. And I'm really glad that I don't have to struggle that much, because a lot of people go from a lot of mentors, right? Sign up for this guy, sign up for this guy's service, that guy's service. Everybody looks at prices different way. Everybody has their own technique of working in the markets, right? So thankfully, to me, it did not take a lot of time, you know, bouncing from mentors to different mentors. When I did come across Raja Banks, there were few things that were different from other people, okay? The first thing that really caught my attention is he was trading live, which at that time, 2019, you could not find anybody Okay. on YouTube. Nobody was trading online, showcasing his trading online in front of people, okay? A lot of people can make trades, right? Copy and paste it, that this trade took place here, I exited there, I have a 200 pip reward, 300 pip reward. We have people like this in our Discord too, right? When the trade is done, finished, and then you see the outcome. But how did you plan on taking that trade? What it takes fundamentally and technically to enter and exit the markets? What is the risk management parameters? So those were the new things I was introduced from my mentor, Raja Banks, in 2019. And since 2019 until now, I've been following the same core concepts. Keeping it simple, no fancy indicators. Now, indicators are very common, right? A lot of new traders, when they come into markets, they get told that, hey, use this indicator, that indicator, and you know, when indicator signals a buy, you take a buy, and when an signal a sell, you take a sell. If it was really that easy, then I mean, anybody can deposit a few dollars and start trading and make a lot of money out of it. But unfortunately, it does not work. So as of you, Danny, thank you very much for your introduction and your journey in short, actually. So you are not admirer of any indicator. I have seen more than one in a year. Okay. So you never like indicator. You never tell people to go for this indicator, that indicator, because price action is a thing which give you a good turn in your career, actually. So Exactly. you are now, I think, most confident trader who is just taking the trade which is going to be a potential profit, and it is there actually, because people can see live. Because as you said, Raja Bank is the only trader who can do it live, who started it live. Now many people Exactly. are doing it live, but Raja Bank is the one who Exactly. started this. He giving you and his full analysis, how he is thinking here, breaking down, and how he's managing his risk. So we will have questions from our members also, but we will go with the flow of around 10 to 14 questions from my side. If anybody needs Sure. any question, please you can raise your hand and we will ask Danny to answer. Okay, so how did you develop your trading strategy, and what factor do you consider when making trading decisions? So the strategy I use is very similar to my mentor, okay, using support and resistance only. Okay, I did tweak it up a little bit. I do scalp trading as well as zone to zone, which is not technically a swing trade.
you can call it day trading. Day trading is where basically you tend to hold your trades for a little bit longer than scalping. Scalping is basically using the lowest possible time frames. 1 minute time frame, 5 minute time frame to catch 1 or 2 candle move in one direction only. So you just plan out an entry, look for criteria to enter with confirmations, such as a closure above support or closure below support for sells, right? So mainly it's based on support and resistance for scalping. But if the market opportunities are, I would say, confirmative enough to give us a zone-to-zone trade, such as a supply area to a demand area, and confirmations are there, timing is there, volume is anticipated to be there, so we can take those trades. So mostly is based on support and resistances only. And this is not, I would say, my own strategy, it's just basically my mentor strategy, which is trading support and resistance. But this supply and demand add to it is something new I've added to it. Roger Banks does not trade supply and demand, he only trades support and resistance only. And mainly, time frames he would trade would be 15 and 30 minute, 90% of the time, where I focus on 5 and the 15, which is a little bit smaller compared to what he does. The thing about the 15 and the 5 minute is you can only use those in high volatile pairs, such as gold, US oil, you can use those. When it comes to currencies, trading GJ or any other currency pair, 15 and 5 minute confirmations will be considered weak. So it makes sense why Roger Banks would be trading a 30 minute closure, 15 minute sometimes, because he mostly looks at GJ as well, right? Yeah, so, two pairs. yeah. So mostly similarities, there's no changes in the strategy, I would say. But gold is the one who made Raja and Daniel rich. Yes. once you touch gold, you cannot go back to anything. Yeah, that's for sure. Yeah. So, well, people would love to know from you the difference between support and resistance and demand and supply, as you said. The difference Yeah, between support. these two things. One thing I want to ask is the audience here. Are they starting at a very beginning stage, or they're somewhere in the middle? In the middle, sir. Somewhere in the middle? Yeah. Some of them lucky, they are just beginner and they got you here on this platform. Okay. Okay. Beginning. Yeah, I'm just trying to find out because I don't want to go too advanced, so they're like, oh, I don't understand what you said. So, so let's what I start mean? from very common things. Yeah, so the strategy you have to develop is by following a mentor, of course. So I'm assuming everybody is not beginner. Some of them are at the beginning stages, some of them are in the intermediate stages. If you are profitable, then you are not a beginner, that's for sure. But everybody doesn't understand the basics, demand and supply and other things. So they just want to see your setup once. So how you define these things on the chart. Yeah, of course. In order to truly see my type of setups, I think the best example is to take any recap of my live stream. Any live stream I've done, the first thing we ever do is break down the time frames. Daily time frame all the way to our trading time frame, which is the 5 minute. So it's multiple time frame analysis combined together to come up with our biases. Are we going to be looking for buys or sells, right? But long story short, support and resistance. At the beginning stages, you have to find a mentor first, okay? Now, the way I will treat support and resistance is going to be different how Raja Banks treats support and resistance. The way Dr. Collier will treat support and resistance will be much different than mine. Everybody has support and resistances, but how they treat those and how they find confirmations off of those levels are very different. So at the beginning stages, I would say first 3 months, 6 months at the beginning journey of your trading, you really need to see how the person you're learning from, either you're learning from Dr. Collier or some other mentor, me, Raja Banks, you need to understand the strategy first. Okay, start to understand the strategy first, its mechanics. Okay, if somebody only trades support and resistance, then follow through how they take trades. Let's say in an uptrend. We don't have Zoom here. If we had Zoom, I could annotate. I could show you a few examples, but they will be switching to your channel next session, so we will be seeing. So yeah, you can come on the live stream and check it out. But yeah, long story share short, your screen here if you want to share. Does this platform allow to annotate anywhere? Yeah. There is a arrow mark, and you can say present now. You can share your screen. Yeah, if you can share my screen, that would be perfect. There is an arrow mark upside. Oh yeah, there you go. Perfect. Yeah. Is it sharing now?
There. Yeah, now we can see your screen, Danny. I can see it? Yeah, Okay. Do you see the chart? yeah, we can see your chart now. For daily Perfect. candle. Okay. Awesome. So, in the beginning stages of trading, right, you have to understand a few things. Few things which are regarding technicals and regarding fundamentals. If I can't write or type, it gets really hard for me to explain, so this is what I have to do with technicals here, and then you have fundamentals here. These are common things you will always implement into trading. Regardless of whoever you follow as a mentor, or somebody you look up to or teach from, these are the two things they will always teach you. Something regarding technicals and something regarding fundamentals. I know, Now, Danny, at the how begin- you filter your tradings. You never trade without retest. So that is making sure that you are not entering in a fake out. This is how you are avoiding most potential losses which can incur in your account. So I think retest is your power actually behind your success. Yes. I wouldn't say the only power. It actually depends on many market conditions. Sometimes, like today is a day where you cannot get a perfect retest. Because today is a day, think of it as an earthquake. Today is an earthquake because we have taken out a very, very powerful area on gold. 1950 is your weekly lows, 1950 is your daily zone. Whenever you are breaking key zones on a higher time frame, the lower time frames will be in shock, such as usual then higher momentum. Sometimes price just keeps on dropping without a retest. And even if you wait for a retest, sometimes the retest is not there. You don't get your candles closing bearish, right? But we will go over that. But it's not true that always I'm gonna look for a retest. Sometimes a breakout does just fine, right? It just depends on conditions, and every day conditions are different. So a few things I want to go over first is the technical perspective, right, of the market. Regarding me, I'll just talk about me. Let's just say for me, support and resistance are the main go-to, okay? Support and resistance will be my main thing when it comes to trading, okay? So support and resistance, where I would consider those all across the time frames. You are looking at daily time frame, 4 hour, 1 hour time frame. Those will be areas which are tough to break. Now, the support and resistance you have on the lower time frames, such as 30-minute, 15-minute, and 5-minute, those could be broken easily. So this is the first thing I know about technical analysis. So Whenever, higher the time frame, stronger the level, right? yes, Okay. exactly. Higher the time frame it is, the stronger the level is going to be. A daily support is 100 times more stronger than a 5-minute time frame support. And there's a very good chance if daily time frame, let me just see if I can open the Zoom too, so I can edit it. Yeah, Zoom really helps when you have the annotation button there. I need a session from you how you draw these figures on Zoom because you're so quick and the drawings. So I'm trying. So, but It's free. no, I couldn't make it so fast like you. So you need to Yeah. teach me some time. Yeah, Zoom I've been using for a long time, but it's just free. Just download the Zoom platform, and once you screen share, you get all these options to, mark up. And it's easier. Windows has an option too, tools option to mark those up, but it's not as good as this one. Yeah, right. So the simple lesson about support and resistance, a support is simply an area where if price has created support previously, it comes back down to that area, we could expect price to move back up again. So it's simply a floor where we cannot further penetrate through, okay? So tendency for price to go back up is stronger. Now, depending on confirmations, right, you will start to develop what type of confirmations you look for. Maybe you wait for a 30-minute candle to close bullish in your direction to take a buy. Maybe you see price is not being able to, close below support, closes above support, so you wait for next candle to close bullish to take a buy again. But long story short, support and resistance is going to be the main go-through for technical trading. Lower time frames, support and resistance will be weak. Higher time frames, support and resistances will be stronger. Taking a live example out of gold on the daily time frame, let's just say, you have 1950s. Now the first time you have created this support, okay, was back last week.
Friday we had a news regarding a Fed speech. Fed chairman give a speech. A lot of uncertainty, a lot of risk on sentiment caused gold to move up fundamentally. But in technical perspective, daily did not break below the previous, closed bullish, creating a support here. Right. Now, this support formed on the daily. How could you take advantage of these moves? What could you expect this to happen? Well, you will look at a multiple prospects of it. So let's say this is me starting in the morning. This is me starting in the morning. I'm coming into my session. I will look at the daily time frame. It's always the daily time frame we look at first. Daily so far is moving in a direction which is, a downtrend. So you identify a trend first. Your higher time frame trend is going bearish here. Right. Okay. We are looking at structures, right? Now structure is what? Price, if it's moving down, it's really simple. It will be making lower highs, a set of lower highs, and it will be making a set of lower lows. This is the basics of a downtrend, right? Some people don't understand what downtrend is. This is a downtrend is when price respects the high of the previous, but breaks the low. Every opportunity for a sell, a stronger, powerful sell opportunity is when we do break the low of the previous. Because when we are breaking the low of the previous, we are making the new one. And when we are making the new low, this is where you capitalize on the opportunity. Some people do tend to enter when a resistance is formed. This is where Dr. Pravir was saying that break and retest is my main go-to. Yes, it's true. Sometimes I will enter at the retest if it looks good. Let's just say 30-minute time frame. Today I waited for a 30-minute candle to close bearish and create a resistance, but it's not strong enough today, right? Today we had a lot of things going on instead of that. But normally, my view would be to enter when we break the structural low. Break structural low, make a new one. Once we make a new one, right, support is formed on a higher time frame basis, we can indicate a pullback. Now I will refrain or stay away from trading pullbacks because it is very uncertain. The problem with the pullbacks is sometimes you get a good pullback. It depends where you're coming from, right? Coming from as in if you are coming from a major support. Let's just say this support right here was hypothetically speaking on gold at 1800s. Now 1800s is not a small level on gold. Any rounded numbers on gold, 1900s, 1800s, 1700s, 1600s, all these numbers are classified as psychological levels. Perfect. A psychological level is a level which we should not be able to break that easily. If we have, let's just say, broken above 1600s, you will see in the future time when you observe more on gold, let's say if you do trade gold, you will observe if price decides to break above 1600s, it will do everything in its power to stay above it. And if it happens to break below the 1600, which is psychological level, it will do everything to stay below it. Yeah, right. So there's a lot of up and down when it comes to these levels. So using that idea in your mind, let's just say price has come down to 1800 psychological level, and let's just say a candle has closed bullish, created support. That is a very, very powerful support. Okay? So market all can we have bounce from here. Sorry? So market can bounce from 1800 again upside, right? Yes. And a lot of, well, let's just say not everyone, most of them just wait 1800s to be tapped into and just take a buy from there. We're calling in bottoms. Calling his bottoms is very, very, one of the biggest mistakes traders make too. You can't call a bottom. Market will tell you if it can call the bottom or not. If daily candle is creating support here, then it's created support. It's official now. When candle is open, it's not closed yet, the decision is not final. When a candle is open, you have both parties involved. You have your bulls on the left hand side, you have your bears on the right hand side. They both are fighting back and forth to finally come to a conclusion, right? On Friday, daily candle closed bullish, so we had buyers overtaking the market against the sellers, and we basically created a support. Perfect. I think somebody's phone is ringing. Again? Yeah, there's a phone noise. If somebody's calling you, get that noise, right? No, sir. No? Okay. Maybe it's mine. Yeah, maybe it's mine. I'll turn it on. But yeah. So this example,
what I'm trying to implement is, this example is regarding this area here. Daily candle, we have a support form here. Now, how can we use that information on the daily time frame to take opportunities on lower time frames? This is the whole idea. Because as a beginner trader, I will tell you a few things. Your success will depend on a few factors only. A lot of people think that making your trading sophisticated, signing up for this service, signing up for that service, signing up for Bloomberg News or Twitter News, it's really not that hard. But making it simple is the hardest task. Making it complicated is the easiest thing, but making it hard, making it simple is the hardest task. How are you going to make it hard in the beginning, but in reality you're making it simple? As a beginner trader or intermediate trader, I'm just assuming everybody here is about 6 to 1 years into trading. Almost, yeah. Yeah. Let's just assume this is the timing for it. Let's just say go with 0.5 up to a year worth of experience in trading. So in this time frame, you have to spend the time. You know what you're focusing on? You're focusing on only a few things. You need to, first of all, choose one session to trade, okay? I say this to everyone that comes on my streams too. When I see people taking trades in Asian session, London session, New York session, I mean, it's good. If you're making money, it's good, sure. You want to be rich? Go for it. But it beats the purpose of trading. The purpose of trading that I was told from my mentor is to have the allowance of time. So you can do some other things in your life too. Maybe you want to spend time with your friends, your wife, your kids, your family members. Maybe you want to go out someday, right? So that can only happen when you can choose your time for one session only. And there's nothing wrong with choosing any session. You can choose Asian session, right? Now people living in a different part of the world, depends on their timing, they will choose one session. So what I recommend is choosing one session first, either London session, New York session, or Asian session. This is the first ever step, okay? Let's just say you are okay with choosing New York session. The timings I use... one question is important because it's related to Canadian time zone. So we have our Canadian team leader, Mr. Jodhveer Singh, with us, and he is saying that people living and working in Canada is really having a tough time to go with trading because they are working and their time zone is totally different. They can't catch the London session, which is a very good movement, pre-London and London session. They can't catch it. So same issues we have with the US based traders. So how you manage in person so they can also follow you like you are doing with your own trading? Okay, so this basically takes to the next question a lot of people ask is trading is something, this is something you don't do in your free time. Trading is something you will have to sacrifice, okay? If you want to trade New York, let's just say people living in North America, normally it's 9 to 5, right? So they will wake up at 7, get ready by 8, catch the bus, catch the Uber, or drive themselves to their workplaces by 9 o'clock. It is impossible to catch New York session. So how do I trade New York session? If you cannot really do anything to solve it, let's just say there's no way you can start a daytime job instead of working in the mornings, or let's just say you cannot do London session, wake up early at night, right? Do London session, then go to work, and then sleep in the evening times. You're gonna have to make a sacrifice though. What I was told at the very beginning, not from a mentor, but from other traders who basically advertise and just do nothing, is this is something you can do in your spare time. This is the biggest lie. This is something you cannot do in your free time. You will have to make time. When you get married, you do the same thing. You sacrifice a lot of things. You spend more time with the person you get married. You have to stay away from your friends for quite some time to spend your time with your wife. Same thing goes with trading too. Anything worth having in life is going to take some of your time. So if you have no other option, you're going to have to do something about your job. Pick a daytime job later on after the afternoon. Or if you can't really reschedule your job is too important to you. If this is important enough to you, you will make changes. I was able to make changes because I really wanted to get this thing done properly. So I had to make sacrifices. I had to, talk to my, management at my workplace and tell them, hey, I'm not going to be doing it in the morning. If you want to keep me, then I can only do afternoons for you. Afternoons and evening time. If the answer is no, then I'll leave and I'll find something else. So right? you stick to your trading actually. So you were about to sacrifice
your job even, because you wanted it, you really wanted it hard actually. You wanted it in your life to become a trader. So that's why that's what I'm telling to my team always. We are ordinary, all of us now. To become an extraordinary, we need to put some extra things to become extraordinary from ordinary. Exactly. So you are very, very right. If really you love your job, so you should not think of trading if you are not doing any sacrifice for trading. To switch to trading, yes, it needs some sacrifices so we can earn. People who is advertising as of you that it is a free time job, no, they are wrong. Market will not accommodate itself because of our time availability. We need to avail ourselves as per market volume and market opportunities. Exactly. Exactly. Yeah, anything worth having is going to take some time. I do have few other businesses, 2 other businesses, not online, physical businesses. Everything takes time to build up, and everything requires sacrifices. At this stage, I have the friends I have 4 years ago, 5 years ago, I talked to none of them because the relationship suffered. In friends, you need to spend time, right? Yeah, right. In order to keep the friendship running, you need to spend time with them. You need to, communicate with them. If there's a gap, such as not talking to them, not spending time with them, they will forget about you. So same thing goes in trading too. If you only do this in your free time and try to improve, you are not going to scale up to a very, very larger scale in a small amount of time. So you're going to have to make sacrifices. So isolation is the key to become a perfect trader. You need to be some isolation, right, to your daily life actually. Yes. So I'm gonna go over a little bit basics first in terms of mindset. It has to do with psychology a little bit, which could significantly give people in your group a good idea. Okay. The first and foremost thing is you don't need to trade. You actually do not need to trade the markets. There's no moral obligation. This is not the only profession in the world where you can make money. You can make money so many different ways. This is 2023. You can literally make money out of anything. People that are sitting at the top level, what they tell you, the secret to make money is find a problem and provide a solution with a small cost to it. You will start making money. But you know what's different in 2023? What I've realized? What if the problem does not exist? If you don't have a problem, then what do you do? If you know a solution to a problem and that problem does not exist, create that problem. Yeah. If you can create a problem, you can eventually provide a solution. So it's never hard to make money anymore. It's never hard. Literally, you can make money out of anything now. Like so it's very easy. Antivirus is working, right? If there is no sale of medicines, they create Corona actually to sell off the medicines. There you go. Everything is business. Everything is business. But it's how you look at it though. A business-minded person, optimistic person will look at these things differently compared to an average person. Average person will just complain. So everything is an opportunity, right? You don't need to trade, of course. If you do want to trade, you need to make sure a few things only. This is mistakes that I wouldn't say I have done, but I have known a few people that have done it before. Is first of all getting comfortable with the amount you're going to be investing to. I'm not a financial advisor, nor do I have the license to advise people how much to they invest. So I'm just going to go with hypothetical example here. You should only invest the amount you're comfortable, losing at the same time. Once that hits your trading account, it's gone. Yeah, right. This is the psychology of it, and this is the basics of it actually. This is the first basic that a lot of people miss out. You know why they miss out? If they don't realize this, the money that goes into your trading account is gone already. If they don't believe this or implement this into the mindset, every time they will be taking trades, they will be closing positions early, and when it comes to price not going in the direction, going against you, you're making losses. Let's say a $1,000 account has gone into negative 500. You will hold that trade just to have hopes that this trade works out and you gain back the money. Instead, when you're going in profits, let's say you have a plus $20 profit here, you will do everything it takes to close this. Your mind will be telling you everything that, hey, now market is giving you money, you're the luckiest person in the world, just close it, man, right? Impatience. And this is the opportunity available, $20, so just go and grab it, right? Yeah, but the difference is they will be okay to hold $500, where some people will be shaking when they see $500, right? So why this starts is always regarding your foundation. So what I'm about to talk about here is your foundation. If the foundation is never strong, you cannot build an empire on top of that.
consistently getting returns at the end of the week. And at the end of the week, I still call it very aggressive. You should not target a profitable week. You should target profitable months, because at the end of the month, people are used to getting their salaries. So this is where you can decide to have a little bit of a withdrawn profit to you, so you can use it, right? Some people withdraw all of it. Some people withdraw a percentage or maybe half of it. That depends on you. It depends on your investment too. So this is a common psychology as of you that people they love to hold their losses in hundreds, but they can't hold their profit. Yeah. In two figures actually. So this is happening with everyone. I think it happens with everybody, and everybody needs they must go through it, but they must learn from these mistakes actually. So why they're holding the losses? Because most of my team also, they hate using stop loss. Either they remove it or they move it, and they end up blowing their accounts. So finally they learn a costly lesson. So now they are in good profits. They are learning so fast, but after making losses is not a good thing. So losses is not a fee we must pay. We must learn from others' mistakes as well if we are having a strong mindset actually. Exactly. I'm going to go over, like I said, the foundations of it. If people, well, since you said it's going to be recorded so they can watch it again, these are the core of psychology. If you can implement this, you could be trading for 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, 10 years from now, and the problem will still exist because it was the foundation that was never built. So foundation in trading is the most important thing. In the beginning, I did not have this. First year, I struggled a lot. Yes, blew multiple accounts because nothing indicated regarding risk management, psychology. Just buy a course or buy a single service, copy and paste. You don't learn that way. Unless you want to do that, that's perfectly fine. But if you want to learn, you cannot learn this way. So I'm going to go over some of the basic things here, right? First of all, you need to get comfortable with the amount you're going to invest into your account. Let's just say in India, $1,000 is a lot of money. In Pakistan, $1,000 is a lot of money, but here is nothing. So let's just go with a theoretical amount, $1,000. When you put this into your account, you need to understand the money is gone already. Okay? If you're starting at the beginning stages, right, you will have to choose a few things first. The amount you're going to put into your account. The second thing you're going to choose one session. Let's just say I chose the New York session, my one and only session. Okay. Next thing you're going to do as a beginner or maybe experienced, you need to choose either 1 or 2 pairs to trade. Okay. What I do, I would normally suggest only 1 pair to trade for now. Okay. Choose 1 pair to trade. Gold is very volatile. It could make you money fast. It could take the money away from you very fast too. So maybe you want to stick with something easy to go. Very common pair for a lot of people, a lot of traders is GJ, pound versus the yen. This is a little bit slower than gold, but at least you don't see a lot of volatility as compared to gold. Right. So these are the basics I'm trying to tell people here. This will improve everything. This will literally set the foundation right so you don't have any issues down the road. If the foundation is built right, you don't need to worry about anything. Okay? So initial investment, choosing sessions, right? One session, whether this New York session, London session, Asian session, just choose 1 pair. Okay? And depending on which session you're choosing, the pair is good to trade or not good to trade either. Gold is not good to trade in Asian session. But it's good to trade in London session, is good to trade in New York session. So depending on which session you're choosing, it is basically letting you to the next stage, which pair you should be choosing as well. Perfect. Right? Yeah. So it goes over that, right? Then simply you need to come up with your trading plan. Trading plan is a very underrated topic discussed in trading. A lot of people have gone through years without it, right? A trading plan simply is your blueprint, is a blueprint in the business, right? Simply put, right? Think of it as making chai, right? You're making a cup of tea, right? In chai, what do you need? You need a few things that have to be done properly. Without that, you cannot make a chai, right? You need, let's just say, 250 ml exactly of milk, right? You maybe need to add a little bit of water. Let's just say 50 ml of water, just to make the milk a little bit thin, not too thick, right? Gaढ़ा chai nahi honi chahiye. Then you add 2 teaspoons, right, of sugar. Remember, it's two teaspoons.
if you put 3 teaspoons, people may not like that much, sugar. They're like, oh, it's too sweet, man, right? So they will repel. And if it's only 1 teaspoon of sugar, they will taste it. They're like, oh, something is missing. So something should not be missing in your trading plan, okay? So a few ingredients needs to be met properly. You need to obviously boil the water first. So what I'm trying to tell you, these are the mechanics to make a chai. This is all the criterias or I would say actions you need to take to make a perfect chai. In order to make a perfect trading outcome, you will require a perfect trading plan. Now, it may not be perfect at the beginning when you make it, but slowly you can tweak it. And how you can tweak it, I can mention that to you too. But in trading plan, you're simply going over a few things. Same thing I mentioned, your initial investment, your choice of a session, your choice of pairs, and once again, at the beginning stages, I'm only recommending you 1 or 2 pairs. I still choose 1. I did gold and DJ in the beginning, I have but only seen you actually just trading. I don't know what you're trading out of live sessions, but only I have seen you trading gold actually. You love that yellow metal actually. So that's very amazing. yes. 2019, when Raja Banks was trading GJ, this is the first time I ever looked at GJ. So I started trading in GJ. Gold, I was previously looking at it back in swing trading. This is before I met Raja Banks. A little bit of a research on how to trade the markets. Bought a few books regarding swing trading, and that went over indicators, support and resistance. Not a big outcome. No blown accounts though, because at least it taught me how to manage risk, how to set up a stop loss, and how to trade support and resistance. But it was swing trading, so it needs a lot of patience. I do not come from a background where there's a lot of patience, right? In my culture, I would say, from Pakistan, not a lot of people are patient. Same thing with my family, they're not patient at all. If a little bit of a salt is missing in the food, they will make a big deal out of it, so there's no patience. Okay. So I don't come from that background. So all of a sudden, holding trades, constantly looking at the phone, obviously, you cannot accomplish that in one day. It takes time. So my experience in swing trading is complete struggle. I don't have the patience for it. And I'm complete honest about it too. Nowadays, right? I have seen you as the most patient traders, because sometimes you are live for 3 hours, but you couldn't find a proper setup as of your rules and your protocols. So you will not trade. You will not trade at all, and you never in fear or greed that I miss it out. I can't see any stress on your face that there is 3.5 hour or live and there is no trade for me, because you believe the next day will come and there will be more opportunities. So this level of patience, you said you are from an impatient family, like me actually. There is really a big transformation in your personal behavior, I think, also, right? From impatience to patient is really amazing. Jitender, any question? Daniel, as you told that gold is not good for Asian session. Yes. What is session for GJ? GJ, you could trade an Asian session. It will still move weak because pound is closed, the yen is open. It's a Tokyo session, so you have Chinese market open, Japan market open, Korean markets open. Yeah. So GJ will get a good move in Asian because Japan is trading. Yes. Okay. Yes, the third largest stock exchange in the market, yes. And when it's open, you could definitely see moves. Strong as compared to New York, probably not, but at least tradable. You could trade it, yes. Right, sir. Yeah, so same topic, making a cup of tea, right? Now, you said how I stay patient during the trades. If my setup is there, I will take it. If my setup is not there, I will not give into the fear that I will miss something out. I need to make money. No, you don't need to make money. You need to bring the standard in the market. You're not slave to the market, and the market is not slave to you. It is a privilege to trade. It is not your responsibility. It's not your right to trade. So you gotta have a little bit of a standard there. So but market it goes back should to not control us. We should wait for the market to come into our setup, and then we should shoot it out, right? For the right time, right opportunity, right distance. Perfect. Exactly. And you know how easy it is to say it, that you should not be controlled by the market, but the reality is market controls everybody. Yeah, So really. achieving that type of area in your trading, it takes time. But once again, everything is leading back to the basics.
everything literally leads back to the basics. You guys will remember the chai example today, because whenever you talk something about off topic, it stays with you. And since I'm relating the chai example with trading, you guys will remember this forever. I can guarantee you that. So back to the chai tea, right? Why I have so much patience, you're calling it. I don't think I'm patient at all, but when it comes to making chai, right? Let's just say you're making tea, right? It needs what? It needs sugar, it needs milk, it needs water, right? Let's say instead of putting sugar, you put salt. Yeah, because of impatience. Right. Would you drink it? Yeah, everything is going to spoil actually. It's spoiled already. No, everything is right. Water is good, milk is good, it looks good, it's put in a nice cup. Instead of sugar, you have the salt. चाय के बगैर नमक डाल दिया. Yeah, so it's आप वो पियेंगे, आप टेस्ट करेंगे वो? No. Yeah. तो वही चीज़ है, ट्रेडिंग में भी वही है. अगर मेरी कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही है तो मैं क्यों चाय को पीऊँ? सारी चाय खराब है फिर. बिल्कुल. तो यही है, एग्जाम्पल वही है, बेसिक्स ही है कि क्राइटेरिया मेरा मैट नहीं हो रहा और वही मिसिंग है, तो मैं इस पे ओवरलुक करके ले लूँगा, ट्रेड नहीं लूँगा. अगर वो ले लिया ना एक बार तो हमेशा यही करता रहेगा बंदा. अपनी जो हैबिट्स है ना वो बनानी है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग के अंदर. कि लोग कहते हैं चलो एक बार मैंने न्यूज़ ट्रेड कर ली, बोलते हैं दूसरी बार ट्रेड नहीं करूँगा, दूसरी बार भी ट्रेड करेंगे. अगर न्यूज़ 100 पे प्रॉफिट बना दी ना तुम्हारी, देयर इज नो वे यू विल लीव इट. ज़रूर ट्रेड करोगे नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, अनलेस न्यूज़ जब नुकसान बचा देगी ना कभी ना कभी, फिर जाके लोग थोड़ा सीधा हो जाते हैं. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. Everything needs to be lined up properly, right? When it comes to trading opportunities, this is a little bit more advanced, but going back to the basics here, एक trading plan बनाना बहुत ज़रूरी है. Constructing a trading plan is very important. I'm sure Dr. Kluver should have ways to construct a trading plan. If you, let's say, don't have one yet, I have examples on my channel. It's free to watch it, no need to sign up for anything. You can simply go on my channel, click on Forex Education. Here, there's a very, very extensive video on how to construct a trading plan. Every videos have highest views except the ones that truly matter. Foundation, nobody watches Foundation, but it is the most important one. Every other video, 30 minutes, right? Look at this one right here. Yeah. The top ranking video is 40 minutes. Liquidity candles, 30 minutes. Oh, I took a trade on the liquidity candle. Tell a new person what is a liquidity candle. He has no idea. But when it comes to Forex trading plan, without a plan, you cannot have a designated outcome, and you can never succeed in trading. It has the least amount of views. So they do this to themselves, and they blame everybody else. This is how the nature works. Nobody wants to accept their own mistake, because when they accept it, they can move on to better things. So they're always stuck in that loop of blaming everybody else. But yeah, long story short, if you don't have, I'm assuming you have it. If you don't have it, you can see it on my channel too. This goes over everything to build a foundation in your trading plan. Okay? Perfect. Once you have built a trading plan, you're good to go. Yeah. Right. When it comes to psychology, I have literally covered every prospect about psychology: beginner stages, intermediate stages, advanced stages. When it comes to fear and greed, FOMO, fear of missing out, all of that is covered. Literally, I think I've covered every single thing in the past year of making courses. But what I try to implement here is basics. You guys need to work on the basics first. If you are somewhere in the intermediate stages, but still struggling to get a good profitable outcome, you need to get a mentor first, okay? If you try figuring trading on your own, it's gonna be tough. I've tried that. It really doesn't work. And I think you guys are very lucky. Everybody in the group of Dr. Prabir, you guys are lucky because you have a community to trade with. Trading alone is much harder compared to trading with anybody else. When you have experienced people around you, trading the same thing, same time, looking for the same outcome, and you can have the privilege or the opportunity to share the ideas together, this is where you can definitely succeed and definitely take control of your trades too. It also creates a sense of responsibility too. वो बोलते हैं ना कि देखना आज मैं क्रिकेट में जीत के आऊँगा, तो किसी को बता दिया ना तो वो गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है कि आज जीतना ही जीतना है, किसी को बता के गया हूँ, वरना वो क्या कहेगा, है ना? Yes, exactly.
So it creates a sense of responsibility. अगर अपने आप से बोलेंगे ना कि आज मैं क्रिकेट जीत के आऊँगा, नहीं जीता क्या हुआ, राइट? किसी और को पता नहीं है ना. Yeah, perfect. So let's switch to Hindi. It looks अच्छा लग रहा है आपके मुंह से हिंदी सुनना, क्योंकि हमेशा आपको इंग्लिश में सुना है, ठीक है? ठीक है, और हिंदी बोलो. पंजाबी से यार. So मैं अक्सर इनको एक जो ओटोमन अंपायर है, कल मैं इसको टीम को एग्जांपल दे रहा था कि मेहमत ने अपने जो फौजियों के जहाज जला दिए थे, कि कितनी दफ़ा हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लड़ने आए पोल को जीतने के लिए, लेकिन वो हारे क्योंकि उनके पास ऑप्शन थी वापस जाने की. इस दफ़ा उसने सारे जहाज जला दिए थे कि आपको आगे जाके लड़ना है और जीतना है, अदरवाइज आपको मरना है, वापस नहीं जा सकते आप. तो उस वक्त वो जीता भी था. उसके बाद पूरा ऑटोमन अंपायर पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंशन उसने ली है और पूरी दुनिया पे उसने राज किया है. तो सम टाइम जैसे हम बात कर रहे थे कि जॉब्स नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट्स, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन भी नहीं सकते. तो वही वर्लपूल ही है, क्रेडिट कार्ड्स और ये डेट्स और ये साइकिल, ये टैक्सेशन, और वही इस वर्लपूल में रहेंगे लाइफ टाइम. तो निकलने के लिए हमें एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा. सो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस, जैसे आपने बिगिनिंग में बोला है, तो सेक्रीफाइस हमें करने ही है. अदरवाइज वी शुड बी रेडी कि हमें सेम हालात में जीना है जब तक हम जिंदा हैं. सो रियली सो एब्सोल्युटली. तो टेक्निकली आपने जो बताया है, फंडामेंटली भी इन शॉर्ट आपने बताया. अभी साइकोलॉजिकली, सो आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करते हो जब ट्रेड करते हो? क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप बहुत बड़ी मूवमेंट के पीछे नहीं भागते हो. 10, 20, 30 पिप इज इनफ फॉर यू. सो उस दौरान बिग लॉट साइज, if I'm lucky I'll get it. You are always, most of time, because you are waiting for confirmations. So जी डन. So, where is it? A trading plan, like I said, what I'm doing is just following my trading plan. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको अपने ट्रेडिंग प्लान की. तो ये मेरा पूरा ब्लूप्रिंट है यहाँ पर. याद है, जुबानी याद है किस तरह करना है. न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना, सुबह 7 से लेकर सुबह 10 बजे तक, 10:30 तक. एक ही पेयर चूज करना है, विच इज गोल्ड, क्योंकि मल्टीपल पेयर्स होते हैं ना स्क्रीन के सामने, तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है. बिल्कुल. To me this happens. किसी और के साथ नहीं होता वैसा, मल्टीटास्क कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता. मैंने 16 पेयर्स को मॉनिटर किया और एंड ऑफ द डे देयर इज नो ट्रेड, देयर इज नो प्रॉफिट एंड ऑफ द डे. या आपने मेरा सेटअप देखा है ना, तो वही वाला जो सेटअप था कंप्यूटर्स पे 4-5 स्क्रीन्स और हर स्क्रीन पे 4-4 पेयर्स, सो एंड ऑफ डे देयर इज the master of the markets. all players क्या ट्रेड करते हैं, सब ट्रेड करते हैं. पर कितना प्रॉफिट है? 0 प्रॉफिट है. 10 ट्रेड में 5 प्रॉफिट 5 लॉस. सो सेम रोड साइज, प्रॉफिट नो लॉस. It's true. It's very true. Yeah. So my trading plan: 1 session, 1 pair. Now here is the most important thing: 1 or 2 trades per day. That's it. Yeah. This is where people struggle the most. 1 or 2 trades per question day. actually, next question है, but now इसको कि अभी इसको क्लियर करेंगे. 1 or 2 trades per day का अगर डिटेल में जाऊँ तो उसका मकसद यही है कि एक सेशन में प्राइस कितनी बार अच्छा मूव दे सकती है. 1 बार देगी, 2 बार देगी, 3 बार दे देगी, लेकिन 10 बार तो नहीं देगी ना. तो एक अच्छे आउटकम ट्रेडिंग में करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, विच इज़ क्वालिटी पे फोकस करना ट्रेडर की, क्वांटिटी पे नहीं करना. क्वालिटी ट्रेड्स वो है जो आप प्लान करते हो, हाई टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक आप ब्रेक डाउन करते हो, टाइम स्पेंड करते हैं ना. हर बंदे का टाइम वैल्यूबल होता है. 30 मिनट आपने लगाया सुबह में या शाम में या दोपहर में एक फुल एनालिसिस करने में. टेक्निकल एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, ये भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ. हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, 30 मिनट आधा घंटा लगाया करने में, सब कुछ रेडी कर लिया. नाउ आपने अपनी एंट्रीज मार्कअप कर दी कि यहाँ से कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, सपोर्ट के नीचे 30 मिनट कैंडल बंद हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक कर देगी, मेरी कॉन्फर्मेशन हो जाएगी, एंट्रीज होगी सर्टन प्राइस लेवल पे. फॉर एग्जांपल 1950 ऑन गोल्ड विल बी मेरी एंट्री. ये आपने टाइपिंग कर दिया. आप रिस्क अपना चूज करेंगे. मैं रिस्क के पर भी जाऊँगा कि लोग क्यों स्टॉप लॉस होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो भी चला जाता है उसके ऊपर. स्टॉप लॉस की एंट्री होगी कि बस कहाँ रखेंगे आप स्टॉप लॉसेस, और एक होगा आपका डेजिग्नेटेड टारगेट. प्रेफरेबली इट शुड बी 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड. अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है. अगर जोन टू जोन ट्रेडिंग कर रहे हैं, विच इज
सेल ले रहे हैं मेजर रेजिस्टेंस से मेजर सपोर्ट जाने तक। जो बीच में जो छोटी मोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगी ना, वहाँ पर खौफ खा के ट्रेड बंद नहीं करना, तो वो हो जाती है जोन टू जोन ट्रेडिंग। तो वो 1 to 2 भी हो सकती है, 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड भी हो सकती है जी। तो उसका मतलब ये है कि अगर 10 पिप का स्टॉप लॉस है तो 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉफिट टारगेट आपका 30 पिप का होगा। तो जब ये क्राइटेरियाज आपने सेट कर दिए ना पोजीशन मार्केट में लेने के लिए, तो ये आप क्वालिटी चूज कर रहे हैं क्वांटिटी के बगैर। जब आपने हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया ना, तो आपने एक बात जरूर पक्की कर ली है कि आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है। यही हम आइडेंटिफाई करते हैं हर रोज कि ट्रेंड कहाँ पर है, कि या बायर्स कंट्रोल के अंदर है या सेलर्स कंट्रोल के अंदर है। अगर सेलर्स कंट्रोल के अंदर है ना, तो सेलर्स के साथ नहीं खेलना है, बायर्स के साथ खेलना है, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्गर है। मैं किस तरह आइडेंटिफाई करता हूँ ये कि फर्स्ट करें, अगर यहाँ से सेल हुई है गोल्ड पे और यहाँ तक जाके पहुँची है, तो यहाँ पर जो सेल हुई है ना, ये सेलर स्ट्रॉन्गर है और ये सेलर्स इम्पल्स लेके आए मार्केट के अंदर। तो एक बंदा इम्पल्स लेके आएगा, एक बंदा रिकवरी करेगा। अगर सेलिंग इम्पल्स है तो जो रिकवरी आने वाली है ना, वो बायर से आएगी और इनके साथ नहीं खेलना, क्योंकि ये कमजोर है। कमजोरों के साथ आप खेलेंगे तो क्वालिटी वाले ट्रेड नहीं मिलने वाले। जो बड़े बड़े टारगेट लोग चूज करते हैं ना, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, वो मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी इनकंसिस्टेंसी होती है, लो ब्रेक कर सकते हैं, यू नो। सो इट्स नेवर गुड टू ट्रेड द पुलबैक। मींस गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, वो बात हो गई है कि अगर सेलर्स का पूरा मोमेंटम है तो उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी को भूल जाएं, कोशिश करें कि सेल की ही कोई रिटेस्ट पे या पुल बैक पे कोशिश करें। तो हमें अपना माइंडसेट अकॉर्डिंग द ट्रेंड चेंज रखना है। ये नहीं कि हर वक्त बुलिश ही रहना है, हर चीज में बुलिश को बुल्स को ढूंढना है कि बाय करना है। तो वो एक ड्रास्टिक स्ट्रेटजी मेरे साथ यही था कि मैं सेलिंग में भी बाय, क्योंकि मतलब पॉजिटिव माइंडसेट, व्हाट डज इट मीन बाय पॉजिटिव? बैंक बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए, माइंडसेट को छोड़ें आप। तो अगर आप एक थ्योरी से जुड़े हुए हो कि नहीं बुलिश को ही ट्रेड करना है, बुल मार्केट को ही बाय, सिर्फ बाय करना है, सो दैट्स रॉन्ग। मार्केट के फ्लो के साथ हमें जाना है, गो विद फ्लो। So trend is friend. Yes. So if you are going against the trend, so we are not making friends. So it will kill us. It will spoil us. Exactly. In short term, yes. जैसे आपने बताया ना कि ट्रेंड को फॉलो करना है। अब ट्रेंड जैसे हमने अपना एनालिसिस किया ना शुरू में, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक, उस वक्त हमारा ट्रेंड बेरिश हो सकता है, लेकिन सेशन के बीच में हमारा ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो उसकी सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं जो सीखने पड़ते हैं, वो थोड़ा एडवांस है, सीख सकते, आप भी सिखा सकते हैं, मेरे चैनल पे भी हैं वीडियोस। लेकिन मकसद बात करने का ये है कि जो क्वालिटी ट्रेड्स है ना, वो मोस्टली होंगे आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे। तो मॉर्निंग में और व्हेनेवर यू स्टार्ट योर सेशन, आपका पर्पस यही है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक, ठीक है। एंट्रीज आप मार्कअप कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई एंट्री नहीं लेता, वीकली बेसिस पे कोई एंट्री नहीं लेता। रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो इन हायर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेडर नहीं ले रहे। कॉन्फर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्लेस करना डेली पे, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और वो मुश्किल ही है, क्योंकि 24 घंटे फ़ोन पे 24 घंटे स्क्रीन पे मॉनिटरिंग करना है, वो किसी से नहीं होता। वही एंट्री डिसाइड करनी है, कहाँ एंटर करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के भी तरीके हैं। कुछ लोग जस्ट छोड़ देते हैं आसमान पे, जैसे यहाँ से एंट्री ली तो वहाँ छोड़ दिया, इसलिए छोड़ देते क्योंकि वहाँ हिट नहीं करेगा। उसके साथ मसला ये, अगर जिस दिन ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं गया ना और आसमान को छू गया सारा अकाउंट के, जितने प्रॉफिट बनाए थे ना छोटे छोटे इम्पेशंस के साथ, 50 पिप का स्टॉप लॉस था, 10 पिप के प्रॉफिट थे, अगर 5 ट्रेड लिए 10-10 पिप के ऑल प्रॉफिट्स हैं, एक ही स्टॉप लॉस हिट करना सारा उड़ाने के लिए। तो इसलिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी है कि चैनल पे मेरे, अगर आपके पास नहीं वो भी रखी हुई चैनल पर, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट 30 मिनट की वीडियो है, सारा कुछ बताती है स्टॉप लॉस के पास, कहाँ पर रखना है, किस लिए रखना है, क्यों रखना है, परसेंटेज लोग बता देते हैं कितना परसेंटेज रखना है अकाउंट का, कैसे 30 मिनट का रखना है। आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो। एग्जैक्टली। स्टॉप लॉस सिर्फ रखने के लिए नहीं होता, ये बहुत कुछ बचाता है, और डिसाइड किया जाता है रिस्क के साथ कि किस तरह लॉट साइज चूज करेंगे, कितना रिस्क लगाएंगे। स्टॉप लॉस का मकसद यही है कि आप एक रिस्क चूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर $1000 का अकाउंट है, फर्ज करें आपने $50 USD रिस्क पे लगाने हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने का मकसद यही है कि जब लूज करेंगे ना, तो एग्जैक्टली ही उतना यूज करेंगे।
लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस इन लोगों के पास जिन्होंने कभी ट्रेड नहीं किया, वो ये बताएंगे आपको कि मार्केट रिस्की है क्योंकि आपके पैसे लूज हुए हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका पैसा कंट्रोल है। जो एक चीज़ आपकी 100% आपके हाथ में कंट्रोल है ना मार्केट के अंदर, वो है आपका रिस्क, क्योंकि आप चूज कर सकते हो कितना लूज करना है। मार्केट उससे ज़्यादा नहीं लेगी आपसे, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, जहाँ पर आप न्यूज़ ट्रेड करते हो। अगर न्यूज़ ट्रेड करेंगे ना तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही लूज होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हमारे पास एडवांस हो जाता है कि वो स्लिपेज हो जाती है, प्राइस स्टॉप लॉस पे नहीं निकलती है, आगे निकल जाती है। तो मैं ना खुद न्यूज़ ट्रेड करता हूँ ना किसी को रेकमेंड करता हूँ न्यूज़ ट्रेड करने को। तो अगर अकाउंट ब्लो नहीं करना है ना तो ट्रेड कभी भी नहीं करो न्यूज़। जी, मैं आज भी इनको ये बता रहा हूँ, मैं हमेशा इसी चीज़ पे बोलता हूँ। मेरे को कोई अगर न्यूज़ में सेटअप देता मैं उसको डांटता भी हूँ कि ये तो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है कि आपने न्यूज़ में तो ट्रेड करनी नहीं है। इवन के डेमो सर डेमो में कर रहे हैं, तो हैबिट तो बना रहे हो ना, डेमो में भी तो हैबिट बना रहे हो आप न्यूज़ में ट्रेड करने की। हैबिट आपकी बन जाएगी अगर, तो यू विल नॉट अवॉइड दिस। जोधवीर सिंह जी, आपका सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल है कि अगर हमने न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी तो कितना टाइम हम ट्रेड नहीं लेंगे? मतलब कि मान लो कि कल को न्यूज़ है 6:30 बजे और हम 1 घंटा न्यूज़ के मतलब बीच में या 2 घंटे या वो प्राइस एक लेवल पे नहीं आता, उसके बाद कब हम मार्केट को देखेंगे कि हम अब ट्रेड देख सकते हैं? इसके 2 आंसर हैं। एक आंसर ये है कि अगर न्यूज़ ट्रेड करनी है, कोई गलत बात नहीं है न्यूज़ को ट्रेड करना, लेकिन एक टाइप की ये ट्रेडिंग है विच इज़ डिफरेंट देन माइन। मेरी ट्रेडिंग करनी से डिफरेंट है। जिस तरह मैं न्यूज़ डे को अप्रोच करता हूँ, जैसे आज एक न्यूज़ थी 8:30 पे GDP रिपोर्ट थी US की, 8:30 पे न्यूज़ आने वाली है। अगर 8:30 पे न्यूज़ आने वाली है तो मेरा प्लान ये है कि मैं स्टार्ट करता हूँ 7 बजे। वो टाइमिंग हमेशा सेम ही रहेगी, 7 बजे आने चार्ट पे, जाना है 10 बजे, 10 बजे 10:30 बजे निकल जाना है। अगर न्यूज़ सेशन के बीच में है ना 8:30 पे, ये ईस्टर्न टाइम है, ये कनाडा का टाइम है, तो न्यूज़ से पहले 1 घंटा 30 मिनट्स है मेरे पास, 1.5 घंटा पड़ा है मेरे पास। तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारी चीज़ें करनी है। हार्ड टाइम पे एनालिसिस करना है, एंट्रीज मार्कअप करनी है, बायस डेवलप करना है। तो वो सब कुछ करके अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है न्यूज़ से पहले, सारे क्राइटेरियाज मिल रहे हैं, तो मैं ट्रेड ले लूँगा न्यूज़ से पहले। लेकिन जब न्यूज़ आ गई है ना तो उससे पहले बंद करना है, न्यूज़ पर ट्रेड नहीं लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल चल रही है, बाय चल रही है आपके पेयर पे, न्यूज़ आ गई, न्यूज़ ऑपोजिट भी जा सकती है और न्यूज़ आपकी डायरेक्शन में भी जा सकती है। जी, कभी कभी उसमें विप सा भी होता है मोस्टली, पहले एकदम से ऊपर फिर नीचे, ना उसमें लोग बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। जो लोग बाय में भागते हैं वो वहाँ उनका स्टॉप लॉस, फिर लोग सेल में भागते हैं वहाँ पे भी डबल स्टॉप लॉस। सो दिस इज हाउ पीपल मतलब बर्बाद हो जाते हैं लोगों के यहाँ पे। मेरे साथ भी बिगिनिंग में कई दफ़ा हुआ, तो मैंने जब आपसे लिंक में आया तो मैंने भी न्यूज़ को ट्रेड करना, मैं लोगों को भी बताता हूँ कि बेस्ट थिंग यू कैन डू इज नो टू ट्रेड। ट्रेड करने से बेहतर आपको ये जानना जरूरी है कि कब ट्रेड नहीं करना है आपको। हर वक्त ट्रेड नहीं कर सकते आप मार्केट में। एग्जैक्टली या सो न्यूज़ मैं मना ही करता हूँ ट्रेड करने को। मसला मैं बता दूंगा क्यों मना करता हूँ। लोग पूछते नहीं है ना कि क्यों मना करते हो। बिल्कुल मना इसलिए करता हूँ कि अगर फर्स्ट करो ट्रेड ले लिया न्यूज़ से पहले, न्यूज़ से पहले ट्रेड ले लिया, ट्रेड जा रहा है प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट काम कर रहा है, सही है। आपने ये डिसाइड कर लिया, इस ट्रेडिंग में सारे डिसीजन नहीं है और कुछ नहीं है, डिसीजन है और डिसीजन के रिएक्शन है। आपने डिसीजन लिया कि मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा जब न्यूज़ आएगी। अगर न्यूज़ आ गई, ट्रेड तुम्हारा ऑपोजिट चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेसन लर्न, नेक्स्ट टाइम वो आप नहीं करेंगे। मोस्टली ह्यूमन की जो टेंडेंसी है वो वही होगी कि वो बचेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। लेकिन मसला पता है कहाँ बन जाता है? मसला यहाँ बनता है कि अगर ट्रेड ले लिया न्यूज़ से पहले, ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, न्यूज़ आ गई और न्यूज़ और प्रॉफिट को ले गई, ये बन गया एक आपके दिमाग में सिनेरियो, माइंड सेट हो, ऐसे सेट हो जाएगा फिर सारी हैबिट्स की ट्रेड के अंदर। अगर एक बार आपने देखी है ना कि न्यूज़ से पहले ट्रेड लिया हुआ और न्यूज़ के साथ मेरा ट्रेड चला भी गया, तो आपकी जो टेंडेंसी है ना नेक्स्ट टाइम ट्रेड को होल्ड करने की, अगर न्यूज़ से पहले लिया हुआ है वो हमेशा रहेगी। और लेकिन नेक्स्ट टाइम न्यूज़ आपके प्रॉफिट में नहीं जाएगी, मे बी नेक्स्ट टाइम एक बार जाएगी, 2 बार जाएगी, 3 बार जाएगी, लेकिन इसका कोई रेट नहीं है, कोई सक्सेस रेट नहीं है, ये बहुत अनसर्टन होता है। तो मेरा टैक्टिक ट्रेड करने का यही है कि अगर न्यूज़ आने वाली है बीच में सेशन के, तो मैं 7 से 8:30 तक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मिल गई तो ले ली, अगर नहीं मिली तो बेसिकली आफ्टर न्यूज़ 8:30 फॉर एग्जांपल 8:30
आई हैव 2 more hours, 2 घंटे रह गए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए। अब ये भी होता है कि न्यूज़ से पहले सेंटिमेंट क्लियर नहीं होता, कंसोलिडेशन प्लेस हो रही होती है, प्राइस ऊपर ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस साइडवेज जा रही है, तो उस पर ट्रेड ले नहीं सकते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम न्यूज़ से पहले ट्रेड लेना मुश्किल ही होता है, लेकिन एक बार जब न्यूज़ आ जाती है ना तो उसकी वजह से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। न्यूज़ को पता लग जाता कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, इसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये पता लग जाता। फिर हम टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि कौन सी लेवल रिस्पेक्ट की है, कौन सी लेवल ब्रेक की है। अगर ऐसी लेवल ब्रेक कर दी है जो ब्रेक करने से सेल हो सकता है, तो न्यूज़ ने वो कर दिया, अब हमारा सेंटिमेंट चेंज हो रहा है सेल पे। पहले हम सपोर्ट को देख रहे थे, वहाँ से बाय लेने थे, अब वो सपोर्ट ब्रेक कर दी है और सपोर्ट को हमने रेजिस्टेंस बना दिया है रीटेस्ट करके, सेल को देख रहे हैं। तो मकसद यही होता है पहले लेना और बाद में लेना, लेकिन न्यूज़ के ऊपर ट्रेड लेना मना ही करता हूँ। यही रीज़न है इसका कि जो उसका आउटकम है ना वो अनसर्टन है, और जब भी आउटकम मेरे लिए अनसर्टन होता है ना न्यूज़ पे या किसी भी चीज़ पे, आई स्टैंड टू होल्ड बैक। अगर मुझे इसका आउटकम नहीं पता है तो मैं वो रिस्क ले ही नहीं रहा। उस रिस्क का क्या फायदा, इसका कोई पता ही नहीं है, रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं नटशेल में कि सुनामी आने का पता है कि 4:30 5:30 सुनामी आनी है, तो सुनामी से पहले फिशिंग करने के लिए नहीं जाना है। उसके बाद भी जब तक वो पानी सेटल नहीं होता है, वो लहरें सेटल नहीं होती हैं, नॉर्मलाइज नहीं होती हैं, तब तक भी ट्रेड नहीं करनी है। तो थोड़ा टाइम पहले थोड़ा टाइम बाद अगर सेटल नहीं होता तब तक अवॉइड करें ट्रेडिंग। इट कैन ब्लो योर अकाउंट, और आपके पूरे मंथ की जो एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ हमने 30 दिन ट्रेडिंग की है, 18 दिन तो पूरे अच्छे प्रॉफिट में है और हम इतने % अप साइड में है, ठीक है, ब्लू में चल रहे हैं, तो वो एक न्यूज़ लास्ट डे भी आपको पूरा महीने में, आपको पूरी महीने की मेहनत को पानी फेर के डिसपॉइंट के समुद्र में धकेल सकती है। सो सुनामी से पहले न्यूज़ का मतलब है कुछ ना कुछ तो होना है मार्केट में, अप और डाउन। अवॉइड करें टेक्निकल्स को। गोल्ड फॉलो बहुत अच्छा करता है, लेकिन गोल्ड कभी कभी बड़ा मतलब सरप्राइजिंगली बिहेव करता है। कभी कभी न्यूज़ पॉजिटिव आ गई है डॉलर के लिए, उसको नीचे जाना है, वो उसके ऊपर डॉलर के साथ साथ उसका हाथ पकड़ के ऊपर जा रहा है कि भाई हम साथ साथ हैं। सो दैट इज आल्सो सरप्राइजिंग। सो गोल्ड का ट्रस्ट, किसी का भी ट्रस्ट नहीं करना है, खास स्पेसिफिक कमोडिटी है, इसकी एक फिजिकल एसेट है। उसमें हमें उसके वो प्रॉपर बाकी पेयर्स की तरह गोल्ड उस न्यूज़ से न्यूज़ नहीं चलता है, उसका एक अपना पैटर्न है, उसकी एक फिजिकल डिमांड होती है मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई। सो वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है न्यूज़ को, कभी कभी वो अगेंस्ट द न्यूज़ भी चला जाता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। अगेंस्ट द न्यूज़ का ये है कि डिपेंड करता है टेक्निकल्स पे कहाँ प्राइस बैठी हुई है। अगर ज़्यादा ही लो हो गई है, वैसे टेक्निकल बेसिस पे वीकली सपोर्ट है, वीकली रेजिस्टेंस है, न्यूज़ अच्छी है ये डॉलर के लिए, गोल्ड को सेल होना चाहिए। उस वक्त सेल नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त ऊपर चला गया। वो ऊपर इसलिए गया है कि प्राइस हायर प्राइस से सेल हो सकता है, लोअर प्राइस से सेल नहीं हो सकता। एक बार हायर प्राइस ड्राइव कर ली फिर से जा सकता है, और इस बार ब्रेक कर देगा। तो कभी कभी टाइम लग जाता है। बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आ गए हैं, उनको उसको हायर ले जाके सेल करना है ताकि उनको ज्यादा मार्जिन मिले, ज्यादा प्रॉफिट मिले, राइट। जिसे हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं आप। वो उसको टैप करके उस जोन को फिर से वापस सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और हम लोग उसको बाय समझ के उसमें जंप इन कर जाते हैं। ट्रैप। सो आपको पता है ट्रैप का ये बिल्कुल सही डेफिनेशन थी ट्रैप करने की। हमने तो लॉस की बहुत बड़ी फीस पे की है इन द फॉर्म ऑफ लॉस चीजों को सीखने की। तो 20-25 हज़ार डॉलर शुरू में सिग्नल्स पे और एजुकेशन पे और गलत मेंटर्स को चूज करके वेस्ट किए, ठीक है। सो वो बड़ा लेसन था, और हमारे लोग लकी हैं कि जिनके साथ आप आज बैठे हुए हो, अपना इतने साल का एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हो। सो जी डैन कंटिन्यू करें। सो क्वालिटी चूज करनी है, क्वांटिटी चूज नहीं करनी। क्वांटिटी में ये है कि प्लान नहीं कोई। इनका क्वेश्चन ले लें। हरिंदर जी आपका क्वेश्चन है? हाँ जी बताओ। Yes, Mr. Zani, how are you? Good. Thanks for coming in the meeting. No problem. Actually, I just want to know for the Asian session. You have any experience for the in the Asian session, like which pair we can trade on that time? Yes, I traded Asian session for about 4 months, only looking at 2 pairs, EJ and GJ. EJ any pair, yeah. The answer is the yen pairs. So any pairs that are open, मैं ये बताऊंगा कि अगर जो मूवमेंट अच्छी चाहिए ना पीरियड के अंदर, वहाँ पर 2 पेयर कभी भी ओपन नहीं होने चाहिए। वर्स्ट एग्जांपल ये है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में यूरो ओपन होता है,
और यूएसडी भी ओपन होता है एक सेशन में। अगर एक ही सेशन में 2 पेयर ओपन है ना तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा बड़ी ऊपर नीचे नहीं होती, छोटी होती है। तो एशियन सेशन में आपके पास यूएसडी बंद है, जीबीपी बंद है, यूरोपियन यूरोज बंद है, कैनेडियन डॉलर बंद है, लेकिन एक करेंसी पेयर ओपन है यहाँ पर, वो है येन। तो उसकी वजह से ना स्विंग्स बड़े हो जाते हैं। तो एशियन सेशन में ट्रेड करना बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये चूज़ करना है कि जो पेयर्स ओपन है वो एक ही साइडेड हो। येन पेयर्स मैं ये रेकमेंड करता हूँ, जीजे, यूजे, ईजे, दे ऑल वर्क इन एशियन सेशन। Okay, thank you, thank you. जो सेकंड पेयर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी मार्केट ओपन ना हो, और एक ही पेयर लीड करे अपनी न्यूज़ को, अपनी डिमांड एंड सप्लाई को। ओके, एग्जैक्टली, परफेक्ट डैनी, दिस इज वन थिंग। Thank you, brother. Thank you. दलजीत कौर, आपका क्वेश्चन है? Yes, sir. Actually, I would like to ask that Daniel, sir, you explained very well regarding the mindset conditioning in news time. I appreciate that, and I would like you to talk about stop loss trading, how it is helpful for traders, please. Okay, stop loss trading is a trade management technique. Trade management is basically when you do all the work. आपने एंट्रीज प्लान की हैं, कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, वो सारी मेहनत का जो फल मिलेगा ना वो आपको मिलेगा ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर। ट्रेड मैनेजमेंट में फ्यू टैक्टिक्स होते हैं। आपने मेंशन किया पहले वाला, वो है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ट्रेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। अदर वन इज पार्शियल क्लोजर्स, आधा बंद करना, जैसे 50% पोजीशन बंद कर दी जब प्रॉफिट में चलेगी। और एक होता है when you close full, which is very common too. तीनों चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन आपने जो बताया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है। इसमें पेशेंस भी बंदा रह सकता है, और जब पोजीशन स्टॉप लॉस पर जाती है तो वो भी बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। इनमें डिफरेंस ये होगा कि जब बंदा when somebody tries to close full, हमेशा वो एक फीलिंग रहती है काश में थोड़ा सा और होल्ड कर लेता। प्राइस 1980 पे तो चली गई है, लेकिन 70 पे भी जा सकती थी और चली भी गई, लेकिन मैंने 80 पे बंद कर दिया। वो जो गिल्ट फीलिंग होती है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो भी सेल्फ सैबोटाजिंग माइंडसेट है जो ट्रेडर को आगे बढ़ने नहीं देता। तो उसकी वजह से लोगों ने पार्शियल क्लोज बंद करनी शुरू कर दी कि मुझे पता है कि टारगेट 1980 भी है और 1970 भी है गोल्ड में। अगर 80 पे आ गया तो मैंने 50% अपनी पोजीशन बंद कर देनी, स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पे होगा ना। ब्रेक इवन का मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम 12 पिप्स से 20 पिप्स तक का होता है। तो ये पॉइंट्स में मैं लिखता हूँ। तो 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड इसका ये होगा कि अगर 12 पिप का स्टॉप लॉस है तो 12 पिप रिवॉर्ड चाहिए 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड बनाने के लिए। तो जब प्रॉफिट चले जाएंगे 10 पिप्स के अंदर, उस वक्त स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले जाना है कॉस्ट प्राइस पे, ब्रेक इवन पे। इससे ये होगा कि थोड़ा बंदा काम हो जाएगा कि रिस्क निकाल दिया ट्रेड से। अब अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे पैसे लूज नहीं होंगे, 0 पे बंद होगा। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो 0 पे बंद होगा। अगर कमीशन अटैच किए हुए अकाउंट पे तो कमीशन डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लॉस नहीं होगा। परफेक्ट। तो एक तरीका ये है। सो ब्रेक इवन इज अ सेवियर ऑफ अकाउंट। या इसमें जो फियर रहता है ट्रेडर में दिमाग में कि अभी लॉस हो जाएगा, तो एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पे जाके वो जो उसकी हार्ट बीट है वो स्टेबल हो जाएगी। चलो ठीक है यार, ब्रेक इवन पे मूव कर दिया है, हो जाए हिट हो जाए, मैं जा रहा हूँ ड्राइव करने के लिए, राइट? यस 100%। ग्रेट, 100%। तो ब्रेक इवन बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। हमेशा 10 पिप्स पे कभी कभी ब्रेक इवन नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कॉन्फर्मेशंस पे, किस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेक इवन पे ले जाना जरूरी है इन माय ओपिनियन, कि रिस्क जो लगाया ट्रेड पे वो निकाल देना। सिंपली वे टू डू इट इज ब्रेक इवन कर देना। अब कुछ लोग ब्रेक इवन से स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हैं प्रॉफिट, क्योंकि वो एक किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो है जोन टू जोन, एक हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस से लेकर दूसरी सपोर्ट तक वो ट्रेड कर रहे हैं। तो जब यहाँ से ट्रेड ले लिया और ये वर्किंग करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट चला गया 10 पिप्स 20 पिप्स प्रॉफिट चला गया, तो स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रिस्क लगाया ट्रेड पे वो निकल जाएगा, और जो भी कुछ आप लेना है वो सिर्फ प्रॉफिट ही लेना है, वो बोनस हो गया। तो हाँ जी, तो वो सिर्फ पेशेंस चाहिए होल्ड करने के लिए कि यहाँ तक जाना है और यहाँ पर बंद कर देना है।
मे बी 1% 2% लोग एक्चुअली होल्ड कर लेंगे, एंड तक 90% गिवन कर देंगे कि अब प्राइस रिवर्स होने वाली है, वहां तक नहीं पहुंचेगी, मैं भी बंद कर देता हूँ। तो वो जो माइंडसेट है ना, उसको फिक्स करने के लिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दिया, अब सेल ली है ना, तो सेल का जो क्राइटेरिया सेल का वो यही है कि जब प्राइस नीचे जा रही होती है तो वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती है। आपने ट्रेड लिया कॉन्फर्मेशन पे यहाँ पर कि ये एक लो था, इसको ब्रेक करना है, यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पर प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है पहले, तो यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मैं अपना पोजीशन प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट फर्स्ट करें यहाँ पर डाल दिया। अब जब एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस यहाँ पर, प्राइस फर्स्ट करें यहाँ पर जाके लगी, फर्स्ट लो बना दिया, पहली सपोर्ट बनाई नीचे जान के, तो अब प्रॉफिट हो चुका है 20 पिप्स का। तो मेरा यही टैक्टिक होगा कि स्टॉप लॉस को निकाल देना है। निकाल देने का मकसद कि रिस्क में नहीं है, अब सिर्फ एंट्री पे बैठा हुआ है। तो ब्रेक इवन पे आ गए हैं असल में। हाँ जी, यस। अब जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, वो ये है कि मैंने एंटर नहीं करना मार्केट में जब प्राइस रेडी नहीं है जाने के लिए। जब प्राइस रेडी है ना जाने के लिए, मुझे जब ही एंटर करना है, क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटीज पे आप कैपिटलाइज करेंगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी कि ऊपर नीचे जाएगी, पहले फ्लक्चुएट करेगी, आपको निकाल देगी, फिर नीचे जाएगी। उन सिचुएशन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रेडिंग करने इसमें कहते हैं कि जब मैं अनसर्टन मेरे से रंजिश रख रही है, सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस सेट करके फिर वहीं पे वापस। यस, तो वही मेरा चक्कर है, मैंने किस तरह उसको मैं सॉल्व करूँ। तो उस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जब चेंजेस होती है ना मार्केट के अंदर, जैसे एक बुलिश ट्रेंड से प्राइस निकल रही है, अब बेयरिश ट्रेंड पे आ रही है, तो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है चेंजेस को आइडेंटिफाई करने की, तो आप उन चीज़ों में जल्दी एंटर कर सकते हैं। और जब भी जैसे चेंज हो जाती है ना, कंफर्म हो जाती हैं चेंजेस, तो उस वक्त प्राइस को नहीं जाने का चांसेस कम है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह हो सकता है। स्मॉल एग्जांपल दिखाया था आपको कि फर्स्ट करें यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है। अब चेंज किस तरह समझ आएगी हमें? चेंज इस तरह समझ आएगी कि पहले आइडेंटिफाई करने की ट्रेंड किस तरह मूव करता है। बेयरिश मूव कर रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। फर्स्ट करें एक लो बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हायर लो बना दिया। तो यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हुई हैं। कुछ लोग देखते हैं कि लो हायर लो बना दिया, पहला हाई ब्रेक कर दिया, एंटर मार दिया, लेकिन वो मूव कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता। तो उस कभी कभी मूव पे मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे कंफर्म करना है कि मूव कब जाएगा। अब चेंजेस मैंने नोटिस करनी है कि अब मेरे पास एक लो बना है, वो हायर लो है, पहला जो हाई था वो लोअर हाई था, वो ब्रेक कर दिया। ओके, मार्केट इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। अब मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। मैंने चेक की 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम। लगता है कि वो टाइम फ्रेम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठी हुई है और प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो समझ आना शुरू हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो रहा कि लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का। इस टाइम पे मैं ना कोई इंडिकेटर देख रहा हूँ, ना कोई मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, ओवरसोल्ड ओवरबॉट टेरिटोरी, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को ही मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पर और चेंजेस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग एंटर हो चुके हैं इस वक्त, लेकिन मैं सिर्फ बैठा हूँ अपनी एंट्री के लिए। मैंने सिर्फ इस चीज़ का वेट करना कि चेंजेस कंफर्म हो जाए मेरे लिए। चेंजेस किस तरह कंफर्म होंगी मेरे लिए कि अब इस वक्त मैंने एक नया हाई स्पॉट कर लिया, वो है हायर हाई। पहले हम लोअर हाई बनाते थे, अब बना दिया हायर हाई जी। अब मुझे सिर्फ इस चीज़ का वेट करना है, जो पहला हाई ब्रेक हुआ था ना, वो वैलिड ब्रेक है कि नहीं है। वो वैलिड ब्रेक इस तरह कंफर्म होगा कि हम नीचे आके इसको सपोर्ट ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस बन जाती है सपोर्ट, और वाइस वर्सा एग्जांपल विल बी व्हेन अ रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, और सॉरी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। इस वक्त हम बेयर ट्रेंड में जा रहे हैं, पहले नीचे जा रहे थे, अब ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ से मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। तो किस तरह पकड़ूंगा? चेंजेस कंफर्म करनी है, हाई बना दिया, हायर हाई, लो बनाएंगे, लो का वेट करना, वेट किया, प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ इज बीइंग टर्न्ड टू सपोर्ट, लोग इस पे बाय ले लेंगे कि पहली वाली रेजिस्टेंस पे बाय बना सपोर्ट बना दी है, अब मैं बाय ले लेता हूँ। मकसद ये, अगर वो स्ट्रक्चर हाई ब्रेक नहीं किया ना, तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, फेक आउट हो जाएगा। परफेक्ट, सो वी गॉट दिस नाउ।
सो फेक आउट ऐसे होता है कि वो उसका अगर स्विंग हाई जो आपने बनाया हुआ है रेड में वो अगर नहीं ब्रेक होता है तो इससे फेक आउट सिंपल, सो इट विल कीप डाउन, कीप गोइंग डाउन। यस इस हफ्ते लाइव स्ट्रीम पे ट्यूसडे पे लोगों ने बहुत सारी सेल ली थी सिर्फ रेजिस्टेंस बनने पे, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर लो को ब्रेक किया था, और जिन्होंने भी सेल ली थी ना वो स्ट्रक्चर लो को ब्रेक करने से पहले प्राइस से ऊपर ही चले गए, डिफरेंट वे पे चले गई, फेक आउट कर गई थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है चेंजेस को देखना, ऑब्जर्व करना और कंफर्म करना। चेंजेस हैपन हो रही हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हुई। तो मेरी कॉन्फर्मेशन ये होती है कि पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया, अब जो लो बनाया है वो बनाए ऊपर रेजिस्टेंस के, और हायर लो है वो। जैसे ही यहाँ पर प्राइस ब्रेक, सॉरी जी कुलदीप सिंह जी पूछ रहे हैं कनाडा से कि आप जो है किस टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेते हो, किस टाइम फ्रेम पे आप एंटर करते हो मार्केट में, किस टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग टू ट्रिगर योर ट्रेड? टाइम फ्रेम्स डिपेंड करती है, मोस्टली 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम होती है। अगर बहुत ज़्यादा ही हैवी कंसोलिडेशन चल रही है 5 मिनट पे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर साफ नहीं नज़र आ रहा तो 30 मिनट पे लगेगी, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी 90% ऑफ द टाइम इट्स 5 मिनट एंड 15 मिनट ओनली। क्योंकि अगर बड़ी टाइम फ्रेम का वेट करेंगे 30 मिनट का बना हुआ है तो बहुत देर हो जाती है, 3 घंटे होते हैं सेशन के अंदर, इतनी बड़ी टाइम फ्रेम का क्लोजर वेट नहीं कर सकते जी। और उसमें रिटेस्ट भी नहीं होता ना, फिर बड़ी टाइम फ्रेम में उसका नजर नहीं आता रिटेस्ट। यस, फिजिकली यू कैन नॉट सी। तो फर्स्ट करेंगे 5 मिनट है दुबई से मनप्रीत आपका क्वेश्चन है? Yes. First, I'm very thankful to Mr. Daniel for sharing your awesome experience with our team. So, Mr. Daniel, my question is here. We are all facing the troubleshooting about the fake out. So, how we can avoid the fake out? We are trapped in the fake out. Yep. I was just going to go over that. किस तरह बचाना है अपने आप को फेक आउट से? जो रीटेस्ट बताया ना मैंने आपको कि पिछला हाई ब्रेक करके नया हाई बना दिया, फिर वेट किया रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनने का। अब जब सपोर्ट बन जाती है ना तो उस वक्त लोग बाइज ले लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है, वो टेक्निक भी काम करती है, ब्रेक एंड रीटेस्ट काम करता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मेरे साथ रही है ना ब्रेक एंड रीटेस्ट की, वो ये है कि अगर मैंने 10 ट्रेड्स लिए तो उसमें से मेरे 2 या 3 ही काम किए ब्रेक एंड रीटेस्ट में, तो विनिंग रेट मेरा वो स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा नहीं। और मेरे साथ ये होता है ज़्यादातर कि जब इस हाई का वेट करें ना ब्रेक पर और सपोर्ट यहाँ बना दिए तो कभी कभी एकदम से मोमेंटम वीक हो जाता है और हम रेंज करना शुरू कर देते हैं जी। तो मैं बाय लेके बैठ गया हूँ, स्टॉप लॉस लगाया हुआ नीचे, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, ना हाई ब्रेक हुआ, अब कंसोलिडेशन हो रही है। अब इस किस्म की मार्केट में ट्रेड करना पसंद नहीं होता, तो मैं यही करता हूँ फेक आउट से बचने के लिए भी और साथ में कंसोलिडेशन से बचने के लिए भी कि वेट फॉर द नेक्स्ट हाई टू ब्रेक। यहाँ पर अगर ये हाई ब्रेक करती है ना तो ये रैंडम मूव नहीं है, ये मार्केट का एक डिसीजन है, सॉलिड डिसीजन है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ब्रेक पे एंटर कर सकते हैं, मूव एक ही है, वन डायरेक्टेड मूव ओनली, एक ही जगह जाना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं नजर आनी चाहिए कि अप एंड डाउन स्लो मोमेंटम ना हो। अगर क्लीन रेंज हैगी ऊपर, बाकी में सपोर्ट यहाँ पर थी हायर टाइम फ्रेम में, फर्स्ट करें ये सपोर्ट 30 मिनट पे भी है, 1 आवर पे भी है, 4 आवर पे भी है, और 5 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं और ये चेंजेस नजर आ रही हैं तो ज़रूर ही पड़ जाएगा, इट हैज़ टू। तो इस किस्म की कॉन्फर्मेशंस पे मेरा ये होता है कि मैं जैसे ही एंटर कर गया ना तो प्राइस रेडी है जाने के लिए नीचे, और जब ये जाने के लिए रेडी है तो ईजिली 10 पिप्स मिल जाते हैं। 10 एंटर किया, पोजीशन एक्टिवेट हो गई, मैंने बस अपनी मैजिक कीज निकाली, कीबोर्ड पीछे किया, 10 पिप्स पहुंच गई। इस पर क्या किया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लेके आ गए, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लेके आ गए, मैंने प्राइस मूव 10 पिप्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ट्रेलिंग करूँगा। ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने आपसे पहले कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने की क्या स्ट्रेटजी है। हेलो जी the Jeet yes but she is asking about that. Sorry, दलजीत कौर जी ने पूछा था क्वेश्चन कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, कौन सी टेक्निक जो है बेस्ट फिट रहेगी उसमें। यस, सो ये टेक्निक बता रहा था आपको कि फर्स्ट वी आर मूविंग डाउन, चेंजेस इंप्लीमेंट हो गई हैं, चेंजेस यहाँ से इंप्लीमेंट हुई हैं कि पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट बना दी है,
अब मैं रीटेस्ट पे सपोर्ट बनने पे एंटर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस चीज़ का वेट करूँगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही कि नहीं हो रही। अब इस पे आप ऑन ब्रेक पे एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट करें ये हो रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम जनरली वीक ही होती है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर रेडी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दी है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना दी है, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर ब्रेक करने वाली है और उस 5 मिनट कैंडल में सिर्फ 1 ही मिनट रिमेनिंग रह गया है, तो मैं वेट ही कर लूँगा क्लोज होने का, क्योंकि क्लोज बेहतर है। कैंडल क्लोज विल बी मच बेटर देन ब्रेकिंग। सो फर्स्ट करें कैंडल बंद हो गई है 5 मिनट की कैंडल। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो चेंजेस बनाई हमने नीचे, ये प्रोसेस है चेंज होने का, ये है कॉन्फर्मेशन चेंज होने का। कैंडल स्टिक बंद हो गई ऊपर हाई के ऊपर। अब यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी ना हाई को, यहाँ पर भी लोग एंटर कर सकते हैं, या जिन लोगों ने अपना बाय स्टॉप यहाँ पर लगाया था या खुद ही ऐसे एंटर हो गए थे, वो भी अपनी एंट्रीज मैनेज कर सकते हैं। तो स्टॉप्स ट्रेल किस तरह करेंगे, आप इस तरह ट्रेल कर सकते हैं। ये आपने रिस्क रिवॉर्ड लगाना है। स्टॉप लॉस फर्स्ट करें, आपने लगा दिया करंट कैंडल पे, करंट लॉस लगा दिया। जब यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया, आपने करंट कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा दिया। जब प्राइस ऊपर जाएगी 10 पिप्स पे, तो आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस को लेके आना ब्रेक इवन पे, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जा रही है 5 मिनट पे, सिर्फ एक ही कैंडल है। अब मैं किस तरह स्टॉप लॉस ट्रेड करूँ यहाँ पर, अगर 5 मिनट इतनी तेजी से ऊपर जा रही है तो मैं किस तरह अपना प्रॉफिट ट्रेड करूँगा। आप इस तरह ट्रेड करेंगे कि अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना ऊपर जाते हुए, अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ना ऊपर जाते हुए, तो स्ट्रक्चर पे आ जाती है बात, बेसिक्स पे आ जाती है बात कि जब प्राइस ऊपर मूव कर रही होती है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है। कैंडल का हाई बनता है, कैंडल का लो बनता है, पिछली कैंडल का हाई ब्रेक करके नया हाई बनता है। जब नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करेगी इस तरह से, जिस फर्स्ट करें आपने 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया लेकिन मैनेज कर रहे हैं 1 मिनट पे, तो ये सिनेरियो किस तरह प्ले होगा। यहाँ पर आपने एंट्री ली हुई है यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री ली हुई, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, प्राइस चलेगी 10 पिप्स, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया ब्रेक इवन पर। अब जब ये कैंडल बंद होने वाली है ना, ये बंद हो जाएगी बुलिश, तो नेक्स्ट कैंडल को जाने के लिए क्या करना है, अप ट्रेंड में जाने के लिए प्राइस को एक लो बनाना है, हायर लो बनाना है। जैसे ये हायर लो बन जाएगा, जब हमें नहीं पता कब बनेगा, लेकिन किस तरह कंफर्म करते हैं कि लो बन गया, जब लो बना के प्राइस हाई ब्रेक कर देती है, जब हमारा लो कंफर्म हो जाता है। तो जब ये सिनेरियो हमको नजर आता है ना, या मुझे नजर आता है, तो मैं इस वक्त अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेता हूँ। तो ब्रेक इवन से निकल जाता है नेक्स्ट लो पे। फिर ये कैंडल फर्स्ट करें बंद हो गई, नेक्स्ट कैंडल खुल गई, ऊपर जा रही है। अब इसने हाई ब्रेक कर दिया, जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगी मैं स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हाई ब्रेक नहीं किया तो लो जितना मर्जी चाहे बना लें, एक बार बना लें, 2 बार बना लें, और लो ज़्यादा भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, नहीं पता। तो हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। हाई ब्रेक हो गया, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक कर दिया, अब मेरा स्टॉप लॉस पहले ब्रेक इवन था, अब यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट कैंडल ने भी हाई ब्रेक कर दिया, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। तो 10 पिप्स में गया, ब्रेक इवन पर ले गया, अब प्राइस 30 पिप्स में मूव हो चुकी है। पोजीशन जा रही है 50 पिप्स तक, अंदर 30 पिप्स जा रहे हैं आपके, लेकिन आपने जहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया ना, वहाँ पर आपके 30 पिप्स प्रोटेक्ट हो गए। तो जब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी और कोई चीज़ उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, आप पोजीशन के अंदर ही रहोगे। जब तक प्राइस हायर लोज हायर हाइज बनाती रहेगी, आपकी पोजीशन रन करती रहेगी और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता। अगर प्राइस ने टारगेट को हिट करने से पहले लो निकाल दिया, आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर है, आप वहाँ से निकल जाओगे, क्योंकि उस वक्त प्राइस रेडी नहीं थी जाने के लिए और चेंजेस आ रही हैं, विच इज़ अप ट्रेंड के अंदर प्राइस लो ब्रेक नहीं करती है। अगर 5 मिनट पे सिर्फ बुलिश कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, जहाँ पर एक बुलिश कैंडल बंद हुई, सपोर्ट बना दी, ऊपर गई। अगर रेजिस्टेंस बनाई है तो यहाँ पर बेरिश कैंडल भी है। 5 मिनट में आपको सिर्फ बुलिश कैंडल नजर आ रही है। तो मैं स्ट्रक्चर को यूज़ करके ही स्टॉप लॉस ट्रेड करता हूँ। और जब स्टॉप लॉस हो जाता है ना, फर्स्ट करें टारगेट हिट नहीं हुआ, 50 पिप की रेंज थी, 60 पिप की रेंज थी, टारगेट मेरा हिट नहीं हुआ, लेकिन 30 पिप पे प्राइस ने चेंजेस कर दी, अप ट्रेंड जा रही थी, पहले का लो ब्रेक कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, एंट्रीज मेरी यहाँ पर लगी हुई थी। तो इतना मेरा प्रॉफिट जो जा चुके हैं ना मार्केट के अंदर, वो मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। सिक्योर हो गया। तो जब स्टॉप लॉस हो जाता है ना बंदा यहाँ पर, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है।
कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर चीज़ तो नहीं कंट्रोल कर सकता, रिस्क कंट्रोल था, मैंने रिस्क कंट्रोल किया। अब प्रॉफिट जो मोमेंटम है मार्केट के ऊपर जाने का, वो मार्केट के ऊपर ही है। जब तक ऊपर जाती रहेगी मैं इसका एडवांटेज लेते जाऊँगा, जैसे ही चेंजेस करेगी मेरे अगेंस्ट मैं निकल जाऊँगा और निकलने से मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। जी परफेक्ट। सो ये बहुत ही ज़्यादा डीप आपने हमें बताया, एक सीक्रेट है ये आई थिंक, कि इतनी डेप्थ में ट्रेंड का और प्रीवियस हायर का प्रीवियस लो का रिस्पेक्ट जब तक हो रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन हमारा ट्रेंड में वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, दैट्स अमेजिंग डैनी। सो जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनता है और कैसे जब तक हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज एनी टाइम फ्रेम में रिस्पेक्टेड हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस तब तक एग्जिस्ट कर रहा है हमारा और तब तक हम ट्रेड में बने हुए हैं। exactly. जब हमारा लोअर या हाइज ब्रेक हो गया तब हमारा ट्रेड में बने रहने का मतलब नहीं, क्योंकि वो चेंज ऑफ फैक्टर हो गया है। अब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली गई है। तो डेप्लीशन ऑफ ट्रेंड्स का भी होता है कि जब ट्रेंड वीक होना शुरू हो जाता है उसकी निशानियां होती हैं कि जैसे डाउन ट्रेंड है तो वीक होना शुरू हो जाता है, तो कैसे हमें देखना है। तो फिर किसी दिन हम एक और सेशन करेंगे, बहुत वक्त आपने दिया 1 घंटा 45 मिनट। सो वी आर एज ए पंजाबी कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया फ्रॉम कनाडा वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू डैनी, थैंक यू कि इतने प्यार से इतने टॉप सीक्रेट में लेके जा रहा हूँ आपसे आज। ठीक है। सो जोधवीर सिंह, अभी हमारा बस 5 मिनट का और सेशन रहेगा, किसी का कोई क्वेश्चन है क्विकली पूछें और डैनी फिर है हम आज, क्योंकि डैनी का भी 5 आवर्स का सेशन हो गया आई थिंक हमें मिला के, राइट डैनी? मॉर्निंग। यस we don't know how to pay back, but of course one day we will invite you as a chief guest to the Wave Traders Club. आप ना कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। That's on us. जोधवीर सिंह, आपका सवाल है? हाँ जी, एक ये क्विक क्वेश्चन है कि अकाउंट साइज के हिसाब से हम वो कैसे मैनेज करेंगे कि लॉट साइज कितना लेगी और कितना नहीं, ये भी आप एक बार बता दो प्लीज। ये आपको पता लगेगा ट्रेडिंग प्लान बनाने से, कितना रिस्क लगाएंगे ट्रेड पे। जब ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे ना आपने, तो आपने एक रिस्क चूज करना कि इस अकाउंट पे मुझे 2% रिस्क लगाना है, 5% रिस्क लगाना है। इजी कैलकुलेशन ये कि ये जिस तरह मैं कैलकुलेशन करता हूँ वैसे बता रहा हूँ, जिस दूसरे किस तरह करते हैं वो नहीं पता मुझे। फर्स्ट करें $1000 है आपके पास अकाउंट के अंदर, ज़्यादा हो गई, $1000 है अकाउंट के अंदर, आप रिस्क चूज करें कितना रिस्क लगाएंगे आप एक ट्रेड पे। जोधवीर 5% रिस्क लगाया आपने $1000 पे, तो ये आपको बताएगा अमाउंट कितना है रिस्क पे। और आपकी ड्यूटी ये है कि स्टॉप लॉस ऐसा चूज करना है, इसके मुताबिक चूज करना है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इतना ही लूज होना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान यही है कि 5% लूज करना है, इसके ऊपर लूज नहीं करना है। तो फर्स्ट आपको अमाउंट डिटरमिन करनी है रिस्क के हिसाब से कितना रिस्क लगाना है। 5% लगाया तो $1000 का $50 रिस्क पे होता है। अब बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा और किस तरह लगाएंगे। फर्स्ट करें यहाँ पर कोई एग्जाम्पल मिल जाए। फर्स्ट करें यहाँ पर लगा लिया आपने, ये डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन फर्स्ट करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। यहाँ पर कैंडल रेजिस्टेंस की पर बंद हो गई, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करेगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस पर जाएगी। तो रिस्क रिवॉर्ड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पिछली कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट कर दिया। लेकिन ज़रूरी है कि पीछे भी देखें कि कहाँ तक जा सकती है। वाकई पीछे देखने में आपको लग रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जा सकती है, तो यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट टारगेट करना है। 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड है। अब आपने लगाए $50 रिस्क पर लगाए, क्योंकि 5% है रिस्क अकाउंट। अब स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है कि यहाँ से मेरी एंट्री होगी और यहाँ से मेरा एग्जिट, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस होगा कि यहाँ पर ब्रेक कर गया तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो स्टॉप लॉस आपने कैलकुलेट किया, ये बन गया आपका, फर्ज करें 20 पिप्स का, 20 पिप का स्टॉप लॉस है, और 21 पिप के अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं, 20 पिप्स के अंदर 200 पॉइंट्स होते हैं। तो आपने सिंपली डिवाइड करना है, आपने सिंपली डिवाइड करना है $50 को 200 पॉइंट्स है, इसका आपका लॉट साइज आ जाएगा। परफेक्ट, अमेजिंग। सो ये बहुत इजीएस्ट है, तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, और उसमें है भी नहीं है गोल्ड का,
तो मोस्टली जब गोल्ड ट्रेड करते हैं तो सिंपली जैसे डैनी ने बताया, और ये रिकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। और डैनी के अपने चैनल पे भी बहुत से ऐसे वीडियोस हैं स्टॉप लॉस के बारे में, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे रखनी है ना, अगेंस्ट द काउंटर प्राइस, और किस तरह से सारा मैनेज करना है। तो इस चैनल को भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डैनी जो है हर रोज शाम को लाइव आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। तो जी संधू, आपका सवाल है कोई? माइक अनम्यूट करें। Hello. जी Hi. Hi, Danny. How are you? Good, how are you, sir? I'm very fine. So my question is that you are referring to some magic key. I see some videos from Raja Banks. He is also referring to magic key. So may I know if a noise, मतलब न्यू ट्रेडर के लिए भी कुछ इसका बेनिफिट है, या ये क्या चीज़ है, या इसके बिना भी जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर ही ट्रेड हो सकता है? बेसिक्स पे हो सकता है ट्रेड, इसके बगैर भी ट्रेड हो सकता है। Yep. लेकिन इसके फ़ायदे हैंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ना बटन क्लिक करने होते हैं और उसकी वजह से हमारी साइज मैनेजमेंट हो जाती है। स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन ला सकते हैं एक बटन दबा के, हाफ क्लोज कर सकते हैं। अगर मैन्युअली करते हैं ना ये चीज़ें तो उसमें टाइम लग जाता है। ये पोजीशन को मॉडिफाई करना है, फिर हाफ लॉट चूज करना है, फिर उसको क्लोज करना है, तो उसके टाइमिंग के बीच में ना प्राइस बहुत चेंज हो जाती है। पहले 10 पिप्स होते हैं हाथ के अंदर, फिर 8 पिप्स हो जाते हैं। सो ये फ्लक्चुएशन है जो मार्केट का, उसको काउंटर करने के लिए कि इजीली एग्जीक्यूशन हो जाए जो कि आप करना चाहते हैं। यस एग्जैक्टली, थैंक्स अ लॉट। तो उसके लिए बहुत काम है। यस जी, किसी का कोई और सवाल है? फिर क्लोज करें, क्योंकि फिर हम क्लोज करते हैं अभी। Any question, guys? थैंक यू everybody for tuning in today. वो उर्दू में कहते हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सो वन ऑफ द डायनामिक सेशन जो है, ठीक है। तो फिर किसी दिन मुलाकात होगी अगर आपकी नजर इनायत होगी हम पे, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है डैनी, thanks a lot guys. Thank you everybody. Thank you everybody for joining today. Thank you. Take care. God Take bless care. you. Trade safe. Thank you. Bye all. Thank you, brother. Take care. Thank you. Now everybody Bye. can leave. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thanks a lot, Danny. Thanks a lot. No worries. थैंक यू कुलवीर भाजी, थैंक यू सो मच, सच अ नाइस सेशन भाजी। सो उन्हें अपना भाजी बहुत ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਆਸਟਮ ਭਾਜੀ। जी ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰ ਦਿਓ।